5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1. PS1 on ground, its strap-ons ignited. So PS1 ignited, vehicle lifted off safely from the umbilical tower. Auto tracking. PSLV बिल्कुल आकाश की ओर हमारे अथक प्रयासों की परिणत एक ऐतिहासिक घटनाक्रम हमारी आंखों के सामने साकार होता होगा। एक कहानी, एक कल्पना यथार्थ में बदलती हुई देश को एक स्वतंत्र भारत में ही विकसित प्रादेशिक नवागन उपग्रह प्रणाली का अस्तित्व सामने लाता हुआ हमारा PSLV, जिसकी गड़गड़ाहट से समूचा आकाश थर्राता हुआ और लगता है जैसे अंतरिक्ष की गहराई कम पड़ रही है। So PSLV air lift strap-ons at 25 seconds, this plant has been ignited. Now the vehicle is moving with the first stage and the 6 solid strap-ons. And the time is around 52 seconds. Plus 55 seconds. And it has crossed a range of around 11 kilometers. So at 70 seconds, we should have the separation of the ground lift strap-ons, followed by the separation of the air lift strap-ons at 90 seconds. So right now the time is 68.8 seconds. Ground lift strap-on Yes, separated. the ground lift strap-on has been separated. You can see on your screens the 4 ground lift strap-ons, a trace of the strap-ons being seen in the clear sky that is right now. In another 8 seconds to go for the confirmation on the separation of the air lift strap-on. 88.8 seconds. The vehicle is at an altitude of almost yes, we have the confirmation. Air lift strap-on has been successfully separated at 92 seconds, and the vehicle presently is at an altitude of around 50 kilometers. It has crossed one of the most complex atmospheric regime of flight which every launch vehicle encounters. जी हाँ, प्रथम चरण के इग्निशन के प्रज्वलन के पश्चात लगातार आकाश की ओर बढ़ता हुआ PS जो प्रथम चरण था वो अलग हो चुका है, पृथक हो चुका है, और उसके बाद द्वितीय चरण भी प्रज्वलित हो चुका है। हम लगभग इस समय 123 सेकंड व्यतीत कर चुके हैं। Second stage performance normal. So first stage separated at 110 seconds, and the second stage, which is a liquid stage, successfully ignited, and we have the confirmation that the second stage performance is normal and vehicle has gone into the closed loop. From this instant till the satellite injection, the steering program will be generated by the onboard computer to precisely inject the satellite in its predefined orbit. जी हाँ, निष्पादन बिल्कुल सामान, रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की पहुंच चुकी है, और हम करीब श्रीहरिकोटा से 176 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए हैं। एक छोटा सा एनिमेशन आपके सामने, कैसे जो चरण हैं, स्ट्रैप ऑन्स हैं, वो कैसे अलग हुए, इसी की जानकारी देता हुआ ये छोटा सा एक एनिमेशन आपके सामने। So what you're seeing is the short animation depicting the events that has happened during the first stage of flight, which indicated the separation of the 4 ground lift strap-on, air lift strap-on in the first stage. Second stage performance is indicated normal. We are 189 seconds into the flight. The vehicle has reached an altitude of 110 kilometers. So any time from now, we should hear the announcement for the payload fairing separation. Nominally, it is planned, yes. Heat shield separated. Heat shield has been separated. And what you are seeing on your screen is the ground trace. The trace, the vehicle is presently going after it has taken off from Sriharikota range. This is the ground trace. The red one is the pre-flight prediction. And on your screen with the green color one is the one where the vehicle is presently going through it's a predefined path. So the flight is 230 seconds into the flight, and the velocity is around 4 kilometers. The altitude around 125 kilometers. So as per the planned sequence, the second stage should separate. Second stage performance normal. Second stage performance has been indicated as normal. Second stage should separate in the next 10 seconds when it would have reached an altitude of 131 kilometers. जी हाँ, द्वितीय चरण के प्रज्वलन के कुछ ही क्षणों बाद लगभग, अगर हम प्रज्वलन के समय की बात करें तो उससे लगभग 200 सेकंड के बाद हीट शील्ड सेपरेट हो जाती है। जी हाँ, द्वितीय चरण भी अलग हो चुका है और तृतीय चरण प्रज्वलित हो चुका है। दोनों ये जो पृथक्करण जो क्रियाएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये यान को विचलित कर सकती हैं अपने पथ से, लेकिन अगर आप हमारे जो
कर्व देख पा रहे होंगे उससे बिल्कुल साफ प्रदर्शित होता है कि अनुमानित और अवलोकित पथ दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हुए सामान्य निष्पादन के साथ हमारा पीएसएलवी अंतरिक्ष में अपने पथ पर अग्रसर होता हुआ इस समय लगभग 5.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग प्राप्त किया जा चुका है और हम करीब करीब 725 किलोमीटर का रेंज और ऊंचाई करीब 135 किलोमीटर की प्राप्त कर चुके हैं. So the vehicle is in the third stage flight, which is a solid stage, and the time is 310 seconds. Altitude of around 135 seconds, 35 kilometers. As per the pre-flight predictions, at 385 seconds we should have the burnout of the third stage, which is around 60 seconds from now. And after the burnout of the third stage, there will be a long coasting that will happen before the third stage gets separated from the fourth stage and followed up by the ignition of the fourth stage. So 335 seconds, the altitude is 136, velocity 6.2 kilometers per second. If you look at the display plots of the downrange, what you see on your screen, very precise flight path that has happened during the first stage and second stage of flight, and also during the third stage of flight. And if you look at closely the altitude profile, the pre-flight and the velocity predictions, they have been, the curves have been, this is on your screen. We have the bottom curve, which is the altitude profile, and the top curve, which is above this altitude profile, is the velocity. So very close match with the pre-flight predictions. So 370 seconds, 138 kilometers, and the vehicle has traveled a range of almost 1,200 kilometers right now. जी हाँ, हमें लगभग 9.6 किलोमीटर प्रति सेकंड का जो वेग है वो प्राप्त करना है और ऊंचाई लगभग 497 किलोमीटर जब हमारा IRNSS-1 जी यान से अलग होगा. इस समय हम एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण के करीब पहुंचने जा रहे हैं जब जो तृतीय चरण है वो अपना निष्पादन पूरा करके यान से अलग होने की कगार पर होगा. आप IRNSS-1 जी को 284 ±5 किलोमीटर उपभू या पेरिजी और 20,657 ±675 किलोमीटर अपभू वाली दीर्घवृत्तीय उपभू तुल्यकालिक कक्षा सब GTO में प्रक्षेपित किया जाएगा जो भूमध्य रेखीय समतल के सापेक्ष में 17.86 डिग्री झुकी हुई होगी. इस प्रारंभिक कक्षा में अंतक्षेपण या इंजेक्शन के पश्चात उपग्रह में लगी दोनों सौर पट्टिकाएं पूर्व नियोजित व समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत हो जाएंगी. उपग्रह से संकेत मिलते ही कर्नाटक के हासन जिले में स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा या भूकेंद्र MCF हासन उपग्रह को अपने नियंत्रण में ले लेगा. फिर कुछ समय अंतराल के बाद उचित कक्षा और कक्षी बिंदुओं पर द्रव अपभू मोटर लैम्प के प्रज्वलन द्वारा इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन करेक्शन करके कक्षी त्रुटि निवारण करके कक्षा में अभीष्ट उत्तापन किया जाएगा. इस समय लगभग 7 मिनट 47 सेकंड का सफर खत्म करते हुए PSLV 470 seconds. As per the pre-flight typings, the PS3 burnout happened at 385 seconds. Right now, the vehicle is going through the coasting phase between the third and fourth stage, and the third stage separation should happen roughly around 663 seconds, which is